So good afternoon. We will wait for a few minutes for more viewers to join in. Hello. It's 3 o'clock. Good afternoon, Bhushan Modak. Another few minutes and we will start. So meanwhile, you can put up your questions. Maybe I can take up some questions and start the answer. Questions अपने पूछिए. एप्लीकेशन ऑफ बीबीसीआर. डॉक्टर भूषण थोड़ा इसको ये लेक्चर को कम टेक्निकल बताएंगे, बात थोड़ा लेस होम्योपैथिक टेक्निक्स के बारे में करेंगे. आज ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में बात करेंगे. विल स्पीक अबाउट ऑटो इम्यून डिसीजेस टुडे. सो लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर talk for autoimmune diseases. People join as they find it convenient. Abhishek Makwana, we are going to restrict our talk to ankylosing spondylitis and other autoimmune diseases and what homeopathy can do about it. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो ऑटोइम्यून डिसीजेस है क्या और कॉमन ऑटोइम्यून डिसीजेस कौन से हैं. सो ऑटोइम्यून डिसीजेस इस प्रकार के रोग है जहां पर हमारी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स को या सेल्स के पार्ट को अटैक कर रही है. काफी बार ये ऑटोइम्यून डिसीजेस बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हर एक डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए ऐसा जरूरी नहीं है. तो बड़ा स्पेक्ट्रम है ऑटोइम्यून डिसीजेस का. माइल्ड से लेके एकदम सीवियर, डिसेबलिंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस भी हो सकते हैं. तो कॉमनेस्ट ऑटोइम्यून डिसीजेस है थायराइड प्रॉब्लम्स, दोनों हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, बोथ ऑफ देम कैन बी ऑटोइम्यून डिसीजेस. सेकंड, अगर आप देखेंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंटली मेल्स में देखा जाता है और हमारे स्पाइन को इफेक्ट करता है प्रीडोमिनेंटली. थर्ड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एंड फोर्थ वेरी कॉमन इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसे क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है. तो सभी रोगों में कॉमन चीज ये है कि
अलग अलग हमारे जो सेल्स है बॉडी के, उसको अटैक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति ही करती है। तो सबसे पहले कॉमन डिसऑर्डर में थायराइड की बात करें तो जब थायराइड अटैक होता है तो दो प्रकार की क्लिनिकल डिसीजेस हो सकती है। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जहां पर थायराइड का फंक्शनिंग बहुत कम हो जाता है, और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पर थायराइड की एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होती है। कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाता है कि वेट गेन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट कम होता है। ये नॉर्मली सबसे कॉमन सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि थायराइड की बीमारी कोई ना कोई बीमारी है। वजन बहुत कम होना या वजन बहुत बढ़ जाना, ये फर्स्ट सिम्टम है। सेकंड सिम्टम थायराइड का बहुत कॉमनली हमें पता चलता है, जो हमें बोलते हैं प्रेजेंटिंग सिम्टम, जो डॉक्टर के पास लेकर आता है पेशेंट की ये प्रॉब्लम है, इसका कुछ करिए। तो सेकंड पार्ट इज हेयर फॉल। यूजुअली थायराइड डिसऑर्डर्स प्रीडोमिनेंटली विमेन में होते हैं, मेन में भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली विमेन्स डिजीज। तो हेयर फॉल is the second most common symptom of hypothyroidism or even hyperthyroidism, but predominantly hypothyroidism. Weight loss, ये hyperthyroidism की symptom है। Third very important thing, you will find sometimes sleepiness, थकान लगती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का तीसरा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देखेंगे कि एंजाइटी, काफी बार पेशेंट एंजाइटी लेकर आते हैं, बहुत हरिड, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ गई है, ट्रेमलिंग्स, ट्रेमर्स, ये हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स है कॉमन। और दोनों में, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में, स्वेलिंग ऑन द थ्रोट, ये फर्स्ट सिम्टम है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। तो सभी ऑटोइम्यून डिसीज में एज अ रूल ऑफ थंब, अर्ली इंटरवेंशन इज मोस्ट बेनिफिशियल। अर्ली इंटरवेंशन विथ होम्योपैथी, सो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन विथ होम्योपैथी मोस्ट बेनिफिशियल। जैसे जैसे ऑटोइम्यून डिसीज आगे बढ़ता है तो हमारे सेल्स, सेल ऑर्गन्स काफी बार माइक्रोस्कोपिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब बॉडी खुद से रिकवर होम्योपैथिक दवाई के अंडर नहीं कर पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 15 साल 20 साल बाद अगर आप आते हैं तो काफी बार थायराइड का प्रॉब्लम लेके आएंगे, 20 साल से है, 25 साल से है, थायरोनॉम खा रहे हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट चल रही है। तो इस केस में होम्योपैथी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन फर्स्ट 2 years, 3 years, 5 years, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एरिया जहां होम्योपैथी बहुत हेल्प कर सकती है। तो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ये समझना है। मोस्ट ऑटोइम्यून डिसीजेस arise out of long continued emotional stress. So ये लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस जब रहता है तो काफी बार हमारे
शरीर में जो ऑटोइम्यून डिसीज की टेंडेंसी है, हमारी इम्यून सिस्टम पर जब बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है, तो ये इम्यून सिस्टम का माल फंक्शनिंग है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग है। तो सभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी ऑटोइम्यून सिस्टम माल फंक्शन करती है, यूजुअली आफ्टर ए लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल स्ट्रेस। ये समझना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मेडिसिन यूजुअली इस फैक्टर को समझती है, लेकिन इस फैक्टर को आगे किस तरह से ट्रीट करे, वहां पर उनका शॉर्टकमिंग है। While in homeopathy, this individual stress, individual circumstances which were stressful, above all जो भी circumstances है, उस circumstances में कैसे रिस्पॉन्ड किया, व्यक्ति ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, इससे आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी, आपके इनहेरेंट फेलियर्स, आपके इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स होम्योपैथी कंसिडर करती है प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। सो द माइंड एंड बॉडी इज द होलिस्टिक सिस्टम। दैट इज व्हाई हम होम्योपैथी को एक होलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, जहां आपकी मेंटल इम्पैक्ट डिजीज पर क्या हो रहा है, इसे बहुत बारीकाई से देखा जाता है। और काफी बार उससे काफी बार उसी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हमारा बेस रहता है। सो इमोशनल stress, mental stress is one of the reason for an autoimmune disease. Another impact can be जब हमारे severe infections, autoimmune thyroiditis में भी, when there is a severe viral infection तो खत्म हो गया, उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, उसके बाद अदर ऑटोइम्यून डिसीजेस देखते हैं। जैसे हमने कोविड में अनुभव किया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है, उसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जो एक काफी कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज एक काफी कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज है, तो ये पेशेंट्स में अगर हम देखें, काफी पेशेंट्स में हमें पास हिस्ट्री ऑफ वर्म्स, जैसे एस्केरिस है, पिन वर्म्स है, स्पेशली चाइल्डहुड में अगर आप देखें, और ये वर्म्स को ट्रीटमेंट से सप्रेस किया गया होता है। जब वर्म्स को एंड डीवर्मिंग ट्रीटमेंट जब हम देते हैं, तो काफी बार ये चीज हमें दिखाई देती है। सालों बाद हमारी इम्यून सिस्टम एक हाइपर सेंसिटिव ड्राइव में चली जाती है और हमारे इंटेस्टिनल सेल्स को अटैक करती है। वहां पर सूजन आती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। मेनी डिसीजेस other than ulcerative colitis and Crohn's disease, you will find, especially if you look at multiple sclerosis,
क्वाइट क्लियरली प्रूवन दैट जब वर्म्स होते हैं, वर्म्स को ट्रीट किया जाता है डीवर्मिंग से, तो द पर्सन बिकम्स मोर प्रोन टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और यहां पर होम्योपैथी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी। बट रूल ऑफ द थंब है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस। So as homeopaths, some of my colleagues are here. The idea is to be alert for an autoimmune disease, pick them up fast and start the treatment. तो होम्योपैथी एक ट्रीटमेंट है जिससे इम्यूनो मॉड्यूलेशन होता है। ये शब्द आप समझ लीजिए, इम्यूनो मॉड्यूलेशन। इट इज नॉट इम्यूनो सप्रेसेंट। जैसे कंटेम्प्ररी मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन में आपको स्टीरॉइड्स देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में मीथोट्रेक्सेट देंगे, कभी कभी स्टीरॉइड्स भी देते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो स्टीरॉइड्स, मीथोट्रेक्सेट हमारी इम्यून सिस्टम को नॉर्मल से नीचे ला देती है। जब ऑटो इम्यून डिसीज है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो नॉर्मल से ज्यादा सेंसिटिव है हमारी इम्यून सिस्टम। बट जब इम्यूनोसप्रेशन यूज करते हैं तो नॉर्मल से नीचे चली जाती है। वेरएज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसे मॉड्यूलेट करके नॉर्मल लेवल ऑफ सेंसिटिविटी पे लाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल फैक्टर है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मेन स्ट्रीम मेडिसिन का। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड is the absence of side effects in homeopathic medicine, provided, please underline this, they are taken under a guidance of a qualified homeopath. तो आपके अगर साइड इफेक्ट्स आते भी हैं, बहुत रेयरली आ सकते हैं, पॉसिबल है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. So if you are under a care of a qualified homeopath, even slightest amounts of side effects, if at all they come, can be very easily tackled. And these side effects are usually not distressing, definitely not life-threatening. ये दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से होम्योपैथी must be the treatment of choice. लॉन्ग टर्म थेरेपी कर सकते हैं होम्योपैथी से विदाउट द फियर कि अब ये ड्रग की वजह से जो इफेक्ट्स होंगे वो डिजीज से भी ज्यादा सीवियर हो जाएंगे. सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दिस डज नॉट हैपन विद होम्योपैथी, प्रोवाइडेड you are under the care of a qualified homeopath. Please note this. And secondly, the biggest effect is when you intervene at the earliest. सबसे ज्यादा मुश्किल हमने देखा है कि जब बहुत सारे और बहुत लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स को दिए जाते हैं ऑटोइम्यून डिसीजेस को मैनेज करने के लिए, तो मुश्किल होता है ट्रीट करने के लिए. सो ये एक साइड है जहां पर ऑटोइम्यून डिसीजेस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं. जब डिसीजेस बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, तब तक यूजुअली बहुत लेट हो चुका रहता है. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उस टाइम सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह हेल्प कर सकती है. अनदर वेरी कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज, स्पेशली अगर आप देखें बच्चों में,
is idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP. काफी बार वायरल इन्फेक्शंस के बाद इसे हम देखते हैं. सेम प्रिंसिपल, अर्ली इंटरवेंशन विथ होम्योपैथी. काफी बार हमारे पास पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं जब सब मेन स्ट्रीम मेडिसिन की दवाइयों को यूज कर लिया है और अब कोई चारा नहीं है, बट स्प्लिनेक्टमी का ही चांस ऑप्शन है. उस टाइम पर होम्योपैथ को याद किया जाता है. Fortunately, we are able to help well even in these patients, provided not too much drugs are used, suppressive drugs are used. Yes, and I was talking about very severe, life-threatening autoimmune diseases. So one autoimmune disease which is very life-threatening, fortunately it is very uncommon also, is type 1 diabetes. So हमारे पास काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, यूजुअली बच्चे रहते हैं. एडल्ट्स में लेट ऑनसेट, लिटिल लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज हो सकता है, जिसे हम लाडा बोलते हैं. ये दोनों कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं अगर उनको हम ट्रीट नहीं करें तो ये पेशेंट्स में, डायबिटीज टाइप 1 और लाडा पेशेंट्स में, अगर इंसुलिन की जरूरत है तो है. There is no false promise that I give to my patients कि आप इंसुलिन बंद कर पाओगे, तो नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जब टाइप 1 डायबिटीज आपका डायग्नोज होता है, तब ऑलरेडी more than 90% of your beta cells are destroyed. Please understand this. More than 90% of your beta cells are destroyed. जब बीटा सेल जो हमारा इंसुलिन बनाते हैं वो फैक्ट्री हमें डिस्ट्रॉय हो गई है, तो कहाँ से इंसुलिन बनेगा? तो बाहर से सप्लीमेंट बिल्कुल लेना है. कोई गलत फहमी में रहना नहीं है ये चीज के लिए. तो होम्योपैथी क्या कर सकती है? तो होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है यहां पर. तो क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं? तो सबसे महत्व की बात है, जैसे हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. कभी 90 हो जाएंगे तो कभी 400 हो जाएंगे. ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत डेंजरस होता है हमारे वाइटल ऑर्गन की हेल्थ के लिए. तो होम्योपैथी ये फ्लक्चुएशंस को कम कर सकती है. इससे चांसेस, द टाइम taken for damage to vital organ is further pushed. Second very important part, intercurrent infections, जो होम्योपैथी काफी without the requirement of antibiotics, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो होम्योपैथी कैन प्ले a very pivotal role in controlling those infections. And last but not the least, in type 1 diabetes, what now the WHO looks at, the World Diabetes Fraternity now looks at, is the quality of life. टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की लाइफ क्वालिटी बहुत बहुत मुश्किल होती है. खाने में रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इंसुलिन के शॉट्स लेने होते हैं,
Energy is not good. Infections होते रहते हैं. Skin infections, respiratory infections, GI infections, urinary infections. This aspect can be taken care of. Okay, so I have one question which I'll take. How do you know which case can be taken up for homeopathic treatment? So this is regarding which disease that needs to be clarified. Which disease are we talking about? So it will depend. I mean, type 1 diabetes, which type of cases? Again, rule of thumb, early intervention. And type 1 diabetes always will need integrated care. In fact, diabetes will need integrated care more often than not. And each one of the treatment is supporting the other. What you do not take are those which will require hospitalization, is something that you will not want to venture into in these cases. For we do not have a setup. That is the first part. And the necessary training to deal with these serious life-threatening disorders. But you must be in a situation where you should be able to pick up what is happening. So I can share one experience. This young boy who is just 5 or 6 with type 1 diabetes. So this boy came to me with vomiting and he had stopped eating. And his breath was smelling of acetone. Now this should alert you that this acetone smell should prompt you that this child type 1 prone to going into ketoacidosis and you need to act. Check the sugars. Fortunately, the sugars were quite controlled, but you cannot let the acetone build up because the child was not eating anything. So if you are starving, then also you should know that you will get acetone in your breath. So you have what is called as ketosis because of fasting or starvation ketosis. And we could deal with this episode of vomiting with complete homeopathic treatment. It took 2 days, 3 days with constant monitoring of his sugars because they should not even go into a hypoglycemia because he's not eating. Then you need to adjust the insulin. So usually when it comes to insulin adjustment, I will leave it to the diabetologist. And in type 1, parents are usually experts. They have been taught by the diabetologist how to adjust the insulin. And we could handle the crisis with constant monitoring completely without any intervention from conventional medicine. So this is one experience with type 1 and how you have to be very cautious as young homeopaths. So we move to the other areas also more than diabetes. Rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. ये बहुत again very common disease. Ankylosing spondylitis is a male disease. Rheumatoid arthritis predominantly female disease. Again, the principle is same. Early intervention.
And again, both these diseases, especially rheumatoid, ankylosing spondylitis, has a familial and a genetic predominance of HLA-B27. But having said that, everybody with an HLA-B27 doesn't develop ankylosing spondylitis. So there are other factors, like I mentioned, stress. And the approach for homeopathy is considering the stress and considering the impact of the stress, and to understand how this ankylosing spondylitis of this man is different from that of another. Similarly, Crohn's disease and तो होम्योपैथी में एक एग्जांपल दूं आपके साथ, एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. तो दिस मैन वाज सफरिंग फ्रॉम क्रॉन्स डिजीज, जो नॉर्मली इंटेस्टाइन्स को इम्पैक्ट करता है. बट इन दिस पर्सन, द फर्स्ट symptom was that of joint pains, swelling of the joint. So it was quite a googly even for the rheumatologist to diagnose at the first shot. It took some time, few months in fact, before they could come to the diagnosis. So for a homeopath, this is important कि ये क्रॉन्स डिजीज है बट जॉइंट से शुरू हुआ है. नॉर्मली क्रॉन्स डिजीज इंटेस्टिनल सिम्टम्स से शुरू होगा, जीआई सिम्टम से शुरू होगा, बट ये जॉइंट से शुरू हुआ. तो ये होम्योपैथ के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे इसको टैकल किया जाए. एंड दिस इंडिविजुअल वेरिएशन जो हर एक केस में मिलेगा ऑटोइम्यून डिसीजेस के, ये होम्योपैथ्स के लिए सबसे महत्व की चीजें हैं जिसके ऊपर दवाइयां डिसाइड होती है. Okay, one or two more questions. Dr. Rekha, macular degeneration of the eye in diabetes patient. What is the role of homeopathy? Dr. Rekha, very little experience with this pathology to really make any general statement. I have seen some cases and they are under treatment. Very difficult for me to comment with any definitiveness. What is the role of homeopathy? Any other questions I want to take up? Any broad questions, any general questions, if anybody has? Okay. So I believe today the topic that I had in mind, and also this is a celebration on our part, a tribute to our master, Dr. Samuel Hahnemann. And I see that a lot of homeopathic colleagues are here on the chat, and I would like to say that if we really want to pay tribute to the master in the real sense, to the spirit of the master, then it is important to inculcate a spirit of unbiased inquiry, unbiased and honest observations, and then the conclusion, rather than being aligned to one thought process, to one school of thought, and using that same thought process in every single case. This is completely against the spirit of the master. Like I said, the master was a logical, critical thinker
till the last breath of his life. I made a very short video just few days back. Probably you will see it. My colleague Dr. Keyur Vakharia will put up on our channel. You all can see on this. So I will restrict myself to this. Let us be unbiased, scientific thinking and critical thinking, and not get biased in using just one technique, one way of thinking. Okay, we have Dr. Priya Paul, Homeopathic Management of Chronic Pancreatitis. Dr. Priya, my experience with chronic pancreatitis has been fairly good. Again, depending on the extent of the damage that has happened to the pancreas. That is very important. Again, we need to understand what has gone wrong, why a chronic pancreatitis has taken place. What is the underlying cause? That needs to be understood. Is it stress induced? Is it infective, after which there's a flurry of destructive processes that have started? One will need to identify this and look at the case quite critically. And when we talk of pancreas, chronic pancreatitis, what impact it has on the endocrine and the exocrine part of the gland. So we'll again open the chapter of diabetes when we talk of chronic pancreatitis usually. Sometimes the exocrine function of the pancreas can be damaged, and this can be quite serious and life-threatening. So one will have to examine this, take the individual symptoms of the case and prescribe for it. That is the most important aspect of homeopathy. We'll have to figure out the individual aspect of the case. And that not necessarily has to be the mental stress, if at all. Sometimes you don't get any history of mental stress. So as homeopaths, while it is important that we be holistic, but as homeopaths, we need not be rigidly talking about the mind all the time. So I hope I could answer your question to a certain extent, Dr. Priya. Largely, it is a topic that needs to be taken up at a clinical level and really do the cases. Okay, any other questions? Please feel free to ask. Then the discussion is rolling, else we will call it a day. We keep this video reasonably short. Normally our videos go on up to almost an hour. But what I had to say is already done. Okay, so I will wait for another 1 minute if there are any questions. Else we'll stop this live stream and come back after a few days. For my homeopathic colleagues, currently I am doing a webinar on the therapeutic pocketbook. Feel free to come over, join the webinar. The recordings also will be available after the webinar is over. We are going to have a support class. 4 support class will be announced for the therapeutic pocketbook. We have already done a webinar on Fatak repertory. You're welcome to take the recordings. How much we can help type 2 diabetes. Now,
This question is very broad because type 2 diabetes is a very large disease. Multiple ways of presentation uh, are there. Even within the type 2, there are clusters of diseases in type 2. So, on a broad spectrum, you will see one side is a very mild age induced diabetes type 2, the other side is severe autoimmune diabetes. So, the approach will change, the outcome will change, the disease manifestation will change, lot of things will change. So, very difficult to answer it generically, but like I will say, type 2, type 1, all diabetes are a teamwork with you, the patient, and the conventional medicine physician. We need to have thick coordination if we need, and of course, the nutritionist. And I increasingly see the role of an exercise specialist, sports medicine specialist, or a physiotherapist who is keenly interested in diabetes and exercises. The role is vital. So we need this kind of thick nexus on which, thick network on which we'll be able to help patients with type 2 diabetes. And mainstay, of course, in type 2 diabetes, regardless of whichever cluster the patient belongs to, is lifestyle modification. What is the role that we can play in cases of infertility? Uh, Again, very broad question. We will need to know what is the cause of the infertility in the couple. And a whole lot of things change, the outcome changes with that. So infertility, I would say, is a symptom. Patient presents to you, the couple presents to you with infertility. What is the cause will change a lot of things, even the outcome. There are many cases where we will not be able to help, and some cases that we will be able to help. I hope that gives a satisfactory answer to your question. Okay. So we stop here for today and come back after a few more weeks doing something more interesting. So till then, take care, goodbye, and try aligning with the spirit of the master, his birthday just being celebrated 2 days back, the spirit of scientific thinking. Okay. So bye bye and take care.